तो ये कल मैंने एक सेक्शन छोड़ा था, वो है द डिपेंडेंट अराइजिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो सेक्शन है प्राइमरीली एक्चुअली मैं इसके बारे में देख रही थी क्योंकि इसमें काचना का वर्ड, आई होप सो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइटली, जो काचना है वो क्योंकि हम पहले टीचिंग्स ऑफ बुद्धा पढ़ चुके हैं, जो शायद उनका रेफरेंस आया था, तो मैंने उनके Kachana. Kindly pronounce it. Kachana. Mahakachana the Great. अच्छा, हाँ आई रिमेम्बर कि मैंने जब वो पहले पढ़ा था तब भी मैंने ये गलत पढ़ा था। तो बट नाउ आई विल रिमेम्बर। थैंक यू सो मच सर। सो ये टीचिंग्स ऑफ बुद्धा का पार्ट था, जिसके अंदर ये एक छोटी भूमिका ये है कि जो कच्चाना गोता है सर, ठीक है, अभी कच्चाना गोता है, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था भगवान बुद्ध से कि राइट व्यू क्या है। अब राइट व्यू, इज देयर एनी राइट व्यू आल्सो, इस तरह से बात शुरुआत हुई थी, और ये था भगवान बुद्ध का आंसर उसके संदर्भ में, जो कि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के बारे में पूरा व्याख्या देता है, जो कि हमारी ये पुस्तिका का पाठ भी है। पेज नंबर 240 में है। तो इसी की ये बात बोल रहे हैं। सो मैं पढ़ देती हूँ। दिस वर्ल्ड का कच्चाना फॉर द मोस्ट पार्ट डिपेंड्स अपॉन अ ड्युअलिटी, upon the notion of existence and the notion of non-existence. But for one who sees the world as it really is, with correct wisdom, there is no notion of non-existence in regard to the world. And for one who sees the cessation of the world as it really is, with the correct wisdom, there is no notion of existence in regard to the world. All exists, Kachna. This is one extreme. All does not exist. This is the second extreme. This is the second extreme. Without veering towards either of these extremes, the Tathagat teaches the Dhamma by the middle. With ignorance as condition, volition formation, sankhara comes to be. With volition formation as condition, consciousness. Such is the origin of this, मतलब इसके अंदर पटिच्च समुद्र की पूरी steps बताई गई है। Such is the origin of this whole mass of suffering, but with the remainderless fading away and cessation of ignorance comes cessation of volitional formations. With the cessation of volitional formations, cessation of consciousness. Such is the cessation of this whole mass of suffering. तो हिंदी अनुवाद जो है इसका, यह संसार कचान का, का, काचना ड्युअलिटी या द्वैत पर निर्भर करता है। ड्युअलिटी अस्तित्व या एग्जिस्टेंस के धारणा और अनस्तित्व या गैर अस्तित्व की धारणा पर, लेकिन संसार की उत्पत्ति को उसी रूप में देखता है जैसा वह वास्तव में है। यह एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण है। संसार को जैसा है वैसा देखना। संसार के संबंध में अनस्तित्व की कोई धारणा नहीं है, और वह व्यक्ति जो संसार को सेसेशन यानी संसार की समाप्ति या अंत की तरह देखता है, वह वास्तव में सही ज्ञान या प्रज्ञा है। संसार के संबंध में अस्तित्व की कोई धारणा नहीं। ऑल एग्जिस्ट, सबका अस्तित्व है, जीवित है। काचना, यह एक अति है। और ऑल डज नॉट एग्जिस्ट, सब कुछ मौजूद नहीं है या अस्तित्व नहीं है, यह दूसरी अति है। बिना विचलित हुए किसी अति पर ना पड़ तथागत धर्म का रास्ता मध्यम तथागत के धर्म का रास्ता मध्यम मार्ग का है। अब मार्ग बताते हैं।
अविद्या एक कारण या प्रत्यय से, मैं इसको ऐसे पढ़ती हूँ, अविद्या प्रत्यय से संस्कार, संस्कार प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान प्रत्यय से नाम रूप, नाम रूप प्रत्यय से छह आयतन, छह आयतन प्रत्यय से स्पर्श, स्पर्श प्रत्यय से वेदना, वेदना प्रत्यय से तृष्णा, तृष्णा प्रत्यय से उपादान, उपादान प्रत्यय से भव, भव प्रत्यय से जन्म, जन्म प्रत्यय से बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, क्रंदन, दौमनस्य और बेचैनी, परेशान होना होता है। इस प्रकार सारे दुख समूह का उदय होता है। अविद्या के संपूर्णतः निरोध होने से संस्कार का निरोध होता है, संस्कार निरोध से विज्ञान का निरोध होता है, विज्ञान के निरोध से नाम रूप का निरोध, नाम रूप के निरोध से छह आयतनों का निरोध, छह आयतनों के निरोध से स्पर्श का निरोध, स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध, वेदना के निरोध से उपादान का निरोध, उपादान के निरोध से भव निरोध, भव निरोध से जन्म का निरोध, जन्म के निरोध से बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, रोना, दौमनस्य, परेशानी, परेशान होने का निरोध। इस प्रकार सारे दुख समूह का निरोध होता है। ये एक्चुअली मैंने हिंदी में थोड़ा इलैबोरेट कर दिया, क्योंकि हम ये पुस्तिका में पढ़ते हैं, तो वो था, और बाकी इट्स ऑल डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। मेरा पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू। So I'm supposed to carry on from here, but I want to know, do we want to take a break and meditate over what Poonam just read, or should I continue with the next portion? वैसे तो कोई क्वेश्चन है तो पहले वो पूछ लें, फिर देखते हैं टाइम बचता है कि नहीं। मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? जरूर पूछिए। हाँ, इसमें ना वर्ड लिखा है कचना, ये वर्ड का रेफरेंस समझ में नहीं आया। ना इज अ पर्सन एक्चुअली हु हैज आस्क्ड, मैंने उसका रेफरेंस दिया था अभी कि हाँ, हाँ, भगवान बुद्ध से उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या सम्यक दृष्टि क्या है, तो उसके अच्छा। जवाब में ये उनका आंसर आया था कि सम्यक दृष्टि क्या है। तो इलैबोरेट करते हुए उन्होंने पटिच्चे समुपपादक के उसी समय मेरा वो नेट थोड़ा कमजोर हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली मैंने इलैबोरेट इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे पास अवेलेबल था, नहीं तो आई शुड हैव गिवन इन इंग्लिश आल्सो, कि जो डॉट्स डॉट्स दिए हुए हैं उसको भी। Just as a trivia, मैं भूल गया हूँ, महाकच्चाना is foremost in what? It's slipping me just now. मुझे ख्याल था अभी, but it's kind of going off. Is Kachana Gota? I don't know if it is the same person. Ah, maybe it's not the same. Okay, okay, right. Kachana is foremost in explaining brief teachings of Buddha in the great detail. I see. So Darsab, does that sutta refer to Mahakachana, where there are 6 persons and they all listen to the same thing and have different interpretations, and then Mahakachana is no, that's not him. Kachana is very importantly comes in this Madhupindik. Madhupindik. Okay, right. This is exposition. Okay, and so generally the power is to be able to explain brief teachings in full. Your detailed exposition of Buddha's brief teachings. And then Anuruddha is the one who is foremost in psychic powers, not Moggallon, is it? No, it's after Moggallon. Okay. So foremost in psychic powers ka agar, if we have a quiz, then that is actually Mahamoggallan. Not fully declared by the Buddha. In his case, it was declared by the Buddha that he is foremost. किसके? Mahamoggallan. तो फिर दरअसल जो हम अनुरुद्ध का पढ़ते हैं वो मुझे तो ये It was only in some particular
particular Abhinya, which is, I think, Deva word and being Okay. able to one particular Abhinya. Okay. 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 Very good. Thanks. Incidentally, this quotation was the basis of Mool Madhyama Garika. I think I want to say it since you have heard. This small discourse, the exposition on this discourse is the Mool Madhyama Garika. So, do they say that this is the one Nagarjun is giving a commentary on? I mean, Yes. that's one position. It says clearly. He uses this sutta and then this exposition and relates it to emptiness. Apparently, very simple thing, but Yeah, it's given birth to a whole tradition. yeah. मुझे एक चीज बताइए, since we are anyway digressing, and sorry, I'm sorry to be taking up people's time. You know, there was one conversation going on. I heard, not a conversation, but a teacher expounding. The teacher was asked कि Theravada उसमें non-duality का क्या position है? So his answer was कि इस प्रकार का कोई conception Theravada में है नहीं actually. That's a very Vedic conception. और हालांकि हमने उसको तोड़ मरोड़ के कोशिश कर रहे हैं, but strictly speaking, ये शब्द अद्वैत वगैरह in the way in which it appears in the Vedas, it doesn't appear here. That's true. Hmm. Very good. In fact, So it is repudiated. जी, sorry. It is repudiated. हाँ, के अद्वैत है, that is repudiated. That But there is one universal consciousness which is of which we are a part is repudiated in the Brahmajaras and other places also. तो यहाँ पे वो जो उनमें द्वैत शब्द अपीयर हुआ है, आई एम अज्यूमिंग पाली, इट्स अ करेक्ट ट्रांसलेशन, it's not referring to that whole discussion. It's a common usage of the term. Two approaches to thinking. एक कहते हैं शाश्वतवाद, एक कहते हैं छेदवाद. शाश्वतवाद मतलब क्या होता है सर? जी, शाश्वतवाद मतलब जो शाश्वत जो हमेशा रहता है, एक आत्मा है जो हमेशा रहती है. जो अभी बात कर रहे थे, एग्जिस्टेंस. Yeah. One, somebody believes in existence, it is always there. Somebody believes existence is not there, is cessation. बंदा पैदा होता है, मर गया, खत्म हुई बात. So जो है भौतिकवाद, जिसे कहा जाता है materialistic. Normal modern scientific study teachings or paradigm is materialistic. There is body and there is nothing beyond that. But that person is born because of mother, father, and then he dies and matter ends. तो इसमें एक बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंस, भाई जो आपने बताया कि एक ही जन्म है और उसी में आपने भौतिकवाद हो गया और एक हो गया नॉन एग्जिस्टेंस वाला, और ये ऑल एग्जिस्ट, इससे क्या तात्पर्य हुआ? भाई सब लोग जीवित, अब जीवित. It's not in that sense. No? Existence is not in the sense of that. It is in a philosophical sense. It is in the sense of जो एक कोर है जो है सब में. अच्छा, वो ओके ओके, अच्छा, आत्मा सब में है, इस तरह से. Sense, उस sense. ये जो बद्धा कच्चाना, she was a lady. Chana is the गोत्र. तो बद्धा कच्यायन का आजकल कहा जाता है कात्यायन गोत्र है ना. कात्यायन ही कच्चाना है. जी हाँ, पाली में कच्चाना कहते हैं. लेकिन एक नेम है बद्धा कच्चाना, लेडी बद्धा कच्चाना, वो डिफरेंट है. हाँ, वो डिफरेंट होगा. लेकिन इनका पूरा नाम भी मैंने पढ़ा था तो उसमें बद्धा लिखा हुआ था ना, उसमें भी तो बद्धा लिखा था, बद्धा कच्चाना. वो अभी जो पूनम ने खोला था इसमें लिखा है क्या मुझे कि वो सवाल पूछते हैं जब कच्चाना गोत्रा लिखा है. क्या लिखा था उसमें? बद्धा नहीं था, वेनरेबल कच्चान गोत्ता. अच्छा, ये पूरा नाम है कच्चान गोत्ता. अच्छा, थैंक यू.
So Payalji, maybe you can start for next 10 or 15 minutes, फिर हम meditate कर सकते हैं जो भी आप पढ़ेंगे. Or I mean, if you don't want to wish, then okay. तो आधा आज आधा कल ऐसे. हाँ मतलब you will have something to think upon. Okay. I'll try and finish it by today, but let's see how much is possible in 15 minutes. Huh? Okay. Okay. My voice is clean, na? Clean and clear? हाँ clear आ रही. Okay. Can I request somebody to share the book, please? Nikhil, you could do it, or either Poonam. दीपक जी आप करेंगे, आपने कल कर दिया था. दीपक त्यागी जी. बताऊं हाँ ओके, मैं आपको शेयरिंग राइट देता हूँ. शेयरिंग राइट दे दीजिए. Page 124. नीचे वाला portion, 4 bases of clinging. Thank you. Four bases of clinging. It was easy to see and feel the challenge lay. Clinging to my way and wishes, holding on goes deep. The Buddha spoke of clinging as having 4 successively deeper levels, clinging to sense objects, to rules and customs, to views, and to impressions of what we are. उपादान के 4 आधार. आजान कहते हैं कि ये देखना और महसूस करना आसान था कि चुनौती कहाँ थी. अपने तरीकों और इच्छाओं से चिपका उपादान. ये चिपकाव की जड़ें गहरी हैं. भगवान ने उपादान के 4 गहरे तत्व बताए. सेंस ऑब्जेक्ट्स यानी जो आनंद देने वाले अनुभव होते हैं वाया फूड, म्यूजिक, माने जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सेंस, हमारी सेंसरी, उससे जो हमें प्लेजर मिलता है, एक्सपीरियंसेस, म्यूजिक, फूड, लस्ट, ये इसमें आते हैं. देन रूल्स एंड कस्टम, नियम एंड रीति रिवाज. टू व्यूज, दृष्टि यानी हमारे संज्ञा के साथ हमारा उपादान. टू इम्प्रेशंस ऑफ व्हाट वी आर, जो हमारा पर्सनालिटी व्यू है हमारे को लेके, जो हमारा सेल्फ में बिलीफ है, जो सकाय दिथि है, जिसे हम एब्सोल्यूट ट्रूथ मानते हैं, वो. The first is fairly obvious. It's about hanging on to possessions and feeding on sights and sounds and the rest of it. In the monastery, with the limitation on sense input,
and with a good amount of physical work going on, most of this intensity would gather around the one meal of the day or the hot drink and occasional sweets at tea time. The very energy of clinging to the felt meaning of getting fed would sometimes send so much energy through the system that to patiently wait for everyone to gather, patiently file through to receive the food, patiently wait for everyone to get back, then, after chanting the mealtime blessings, to patiently wait for the senior person to begin eating was quite an achievement. The food itself was nothing special. Sometimes I hardly noticed what it was. Moreover, the degree of satisfaction derived from eating was nothing fantastic and was offset by feeling dull afterwards. The passion was all around the idea, the felt meaning of eating. But that impression of gratification, the appealing nature of the food could shift within minutes. On contemplating the whole issue, it was apparent that the intensity was just around the set of feelings and the drives that clinging made solid and real. For a while, clinging was just clinging to its own interpretations. पहला वाला उपादान क्लियर है, जाहिर ही है, अपनी संपत्ति और दिखाई सुनाई देने वाली चीजों को पकड़े रखना. Just excuse me for a minute, please. Sorry, terribly sorry. I'll take it from the top for the translation. पहला वाला उपादान जाहिरी ही है, अपनी संपत्ति और दिखाई सुनाई देने वाली चीजों को पकड़े रखना. मोनास्ट्रीज में इंद्रियों का इनपुट सीमित होता है, तो काफी सारी एनर्जी वो एक भोजन या चाय, कॉफी या ओकेजनल स्वीट पर इकट्ठा हो जाती है. कई बारी तो खाने का ख्याल ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सबके लिए इंतजार करना या लाइन में लगकर खाना लेना, सबके वापस आने तक इंतजार करना, फिर मील ब्लेसिंग्स में शांत रहना और सीनियर मंक्स के पहले खाने का वेट करना, ये सब में सब्र रखना एक उपलब्धि सी ही लगती है. जबकि खाना खुद में कुछ स्पेशल नहीं था. कई बारी तो खाने पर ध्यान भी नहीं गया कि वो है क्या, और खाने के बाद कुछ संतोष भी नहीं हुआ, बल्कि सुस्त सा ही लगा. जो राग था वो खाने के आसपास था, खाना खाने के व्यू से, मगर खाने का जो ग्रेटिफिकेशन या आकर्षण है वह जल्द ही बदल सकता है. थोड़ा सोचने पे साफ दिखता है कि मुद्दा दिथि का है, जो उपादान से कुछ देर के लिए ठोस और असली लगता है. ये समझ आता है कि जो चिपकाव है वह अपने परसेप्शन, अपनी संज्ञा से है. You are interpreting it wrongly, बेटा. कहाँ लिखा सन्यासी? कहाँ पे, कौन सा सर? कहाँ लिखा है कि सन्यासी है उपादान? Clinging was just a clinging to its own interpretation. अपना व्यू जो है उसी से हुआ ना. इंटरप्रिटेशन तो मेरे व्यू से आया ना, वो इंटरप्रिटेशन. करेक्ट. आफ्टर भोजन के प्रति
एक फीलिंग जागती है कि भोजन खाना है, हाँ मेरा भूख लगी है. सो इट इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन. पहला जो उसमें उपादान बताया गया ना, देखो ऊपर करो, आप जरा ऊपर करेंगे. 4 तरह की क्लिंगिंग है ना. सेंस ऑब्जेक्ट, पहला वाला सेंस सेंस इंद्रियों. ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हाँ. सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? भोजन. तो इट इज ए काम उपादान, अटैचमेंट टू द सेंसरी अच्छा, प्लेजर्स. सेंस प्लेजर. Oh, okay. अच्छा, how the senses interpret it. Oh, Yeah. oh. So that is I only, that is, I mean, actually that language is not strictly, it is basically freely written ना, colloquial भाषा में लिखा गया, तो उसको आप ठीक इंटरप्रेट नहीं कर सकते. अच्छा, sorry. आगे आगे उन्होंने लिखा हुआ, देखोगे तो आगे लिखा है, इट इज टू द फीलिंग. जो फीलिंग हो जाती है ना भोजन के प्रति. आगे नेक्स्ट पेज पे प्लीज. हाँ. Impression of gratification Yes, and the feeling idea. nature. So gratification is due to the feeling. जो भूख की फीलिंग है वो सबसाइड हो गई है. Impression of gratification, the feeling. इसमें वेट करने में दिक्कत क्यों है? भूख लगी हुई है, अंदर फीलिंग हो रही है अप्रिय, और खाने में देर हो रही है. दैट इज द प्रॉब्लम ना. अच्छा, एक्चुअली इन्होंने लिखा था ना, द पैशन वाज ऑल अराउंड द आइडिया, द फेल्ट मीनिंग ऑफ ईटिंग. तो मुझे इससे लगा कि this इट statement एक्चुअली is, मेंट कि I'm हाउ sorry, यू इंटरप्रेटेड फूड, उससे आपके व्यू ऑफ फूड का लगा. this is a colloquial way of writing it. That's not the idea. हमें मालूम है ना खाने के लिए क्या होता है. खाने के अगर लाइन में लगे हों और देर हो रही है तो क्या महसूस होता है, वही बात एक्सप्लेन की जाती हाँ, impatience or yeah. है. ठीक है. It was apparent that intensity was just from the set of feelings and drives that clinging made solid and real. अभी लिखा clinging was just clinging to its own reputations. I don't think that's a kind of loosely spoken language. It's not. Clinging is to the sense pleasures or absence of the fact that the food is likely to come and then my hunger will be satiated. So in that sense, you can say it. This is the first level of clinging. का मतलब तो वही होता है ना, काम उपादान. We can't change that. हाँ जी. आगे भी सर अगर कोई गलती हो तो बता दीजिएगा प्लीज. हाँ, मुझे लगा तो मैंने बोल दिया. नहीं, कहीं आगे भी हो तो प्लीज डू करेक्ट. अपनी तो समझ ऐसी है तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है. तो दरअसल आपने ये बताया कि अगर खाना अभी नहीं पहुंचा है तो उस समय जो क्लिंगिंग है वो हंगर के साथ है. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. सर आप म्यूट पर हैं. खाना, भूख लग रही है और खाना नहीं मिल रहा, तो वो भोजन के प्रति क्लिंगिंग है, इसलिए तो उसके प्रति बुरा लग रहा है कि ये देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं. सो देयर आर सब्सिक्वेंट इफेक्ट्स ऑफ दैट क्लिंगिंग. जो हो तो कुछ रहा है, दैट इज ट्रू, कि मुझे नहीं मिल रहा है, इस कारण से मुझे देर हो रही है, तो मुझे बुरा लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है. जैसे पहले देर से ज्यादा मान लीजिए भूख लग रही है फिर भी नहीं मिला. दैट इज द मेन इशू. भूख अंदर से भूख की है. हाँ, मेन इशू तो वही है ना. भूख की बात कर रहे हैं ना, भोजन की बात कर रहे हैं ना, कि देर लगती है, हाँ वही मैं कह रहा करना हूँ. पड़ता है, वो सब. तो ऑल दैट इफ यू पुट इट इन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, तब क्लियर हो जाता है कि क्या कहना चाहिए. I could experience the same clinging occurring in terms of the second level of clinging, with reference to the rules and customs of the monastery. Everyone uses rules and customs to regulate their lives or occupation. Forms of etiquette, customs around what food to eat at what time, on what day of the week, or around how I like my office to be arranged, as well as religious observances and social taboos. But there's a tendency to go into automatic or to get dogmatic about one's own system. One feeling I had about committing to Buddhist practice was to get out of this,
to be more spontaneous, to live in the here and now. But after about 3 years with nothing to do, nothing to belong to, and therefore nothing to be spontaneous about, I really appreciated things like morning chanting every day, observances around handling and washing your arms bowl, and a training in convention that helped to keep me focused in daily life in a way that wasn't about me achieving or being rewarded. The training kept placing awareness here in what I was doing. अजान कहते हैं कि वे ये चिपकाव सेकंड उपादान में भी अनुभव करते थे, मोनास्ट्री के नियम और प्रथाओं को लेकर। हर कोई अपने जीवन या काम को मैनेज करने के लिए कुछ नियम फॉलो करता है, कुछ धार्मिक और सामाजिक रिवाज भी होते हैं, पर इनसे ऑटो मोड या कट्टरपंथी की ओर जाने का डर रहता है। मगर एक एहसास जो अजान को बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में था, वह था ज्यादा नेचुरल और सहज होने का, हियर एंड नाउ में रहने का। मगर 3 साल एकांत प्रैक्टिस के बाद अजान को मॉर्निंग चैंटिंग या अपने बोल से रिलेटेड रिवाजों के गुण दिखने लगे। वे कुछ हासिल करने या इनाम जीतने के लिए नहीं थे, बस जो काम कर रहे हैं उसमें जागरूकता पैदा करने के लिए थे। It was the same with the system of meditation that I was using. Even if I wasn't good at it, it defined where I was. I got to feel solid. But then there will be a hunger to get even more solid, to be a part of a highly disciplined outfit, and to be someone who could sit like a rock with unwavering mindfulness of breathing. I'll read the next one along with this. So the snag that I hit was that a subtle condescension crept in for people who weren't so solid or couldn't keep up, and an outright dismissal of those here and now types who were sloppy and clearly had no sense of resolution. अजान के ध्यान के साथ भी वैसा ही था। वह डिफाइन करता था कि वह कहाँ थे, मगर वह इससे अधिक एक ऐसा व्यक्ति होना चाहते थे जो चट्टान की तरह बैठकर सांस पे पूरा ध्यान रख सके। तो जो रुकावट आई वो एक प्रकार की अवहेलना उन लोगों के लिए जो इतने परफेक्ट नहीं थे, और जो आलसी और बिना संकल्प के थे, उनके लिए एक डिसमिसिव एटीट्यूड, उनके प्रति डिसमिसिव होना। However, Ajahn Sumedo, the leader of what was supposed to be the crack group, did from time to time cancel routines, either if he thought people were struggling, or just for a break, or maybe it was just for us to see what our minds did. He also lessened the intensity of some of the observances, allowing an early morning mug of porridge because some people weren't so well. And as for a system of meditation, although he sat in meditation a lot, he didn't use much more of a technique than a basic form of breathing for starters. The main theme was one of letting go.
हालांकि अजान सुमेधो समय समय पर दिनचर्या बदल देते थे, या वो उन लोगों को, या तो उन्हें लगा कि भिक्षु संघर्ष कर रहे हैं, या सिर्फ एक ब्रेक के लिए, या भिक्षुस को दिखाने के लिए कि उनके चित्त में उनका चित्त क्या करता है। अजान सुमेधो ने कुछ अनुष्ठान भी कम कर दी। और जहां तक ध्यान की बात है, तो हालांकि वे ध्यान में बहुत बैठते थे, उन्होंने बुनियादी आनापान के अलावा किसी और टेक्निक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुख्य विषय लेटिंग गो था। It was a complete turnaround from how I had been practicing. So it was very confusing for a few years, but it was to the point and very direct. Let go of clinging. Yes, you do get to recognize that taking hold of a system, firming up and getting righteous about it carries the same feel and passion that you can get around a bar of chocolates. It's clinging, and it means you are about to suffer, and probably to inflict some suffering on someone else. जिस तरह अजान अभ्यास करते थे, ये उसके विपरीत था, लेकिन ये संक्षिप्त और सीधा था। उपादान को छोड़ दो। आप ये पहचानने लगते हैं कि किसी सिस्टम के प्रति चिपकाव उसी तरह का एहसास कैरी करता है जो एक चॉकलेट की चिपकाव से होता है। ये उपादान है, इसका मतलब आपको दुख होने वाला है, और शायद किसी और को भी आप कष्ट पहुंचाएंगे। We'll stop here. Yeah, I think it's a good place to stop. Yeah. ओके, तो अगर जो पढ़ा उसमें कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, और अदरवाइज हम अगले 30 मिनट तक ध्यान करते हैं। 8:20 तक हम ध्यान करते हैं। So in an applied sense, हम तन्हा और उपादान को अलग करने की जरूरत है, या इन अप्लाइड सेंस इसको अलग करने की जरूरत नहीं है? टेक्निकली तो है उसमें डिस्क्रिप्शन में, है ना, वो तो बड़ा क्लियर है, बट इन एन अप्लाइड सेंस उसको क्या करें? There's no need to really distinguish. Technically, though, in terms of intensity and of possibility of tanha is something which you can handle. Upadan is you're lost it. But you can always basically करना तो वही है जो तन्हा के साथ करना है। तो ये सारे जो डिस्क्रिप्शंस हैं, क्योंकि आई वाज थिंकिंग ऑल दिस डिस्क्रिप्शंस इन सम इन सम लैंग्वेज डिस्क्रिप्शंस वी यूज द वर्ड तन्हा फॉर देम, है ना। चाहे वो ये प्रैक्टिसेस हों, चाहे वो व्रत हों, वगैरह वगैरह। एक्चुअली वहाँ पे जो कैनन में ना तना के तीन टाइप्स बता दिए, काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा। यहाँ पे उपादान के कुछ और टाइप्स दिए हैं। सो देयर इज सम difference in the subtle differences in the categories. So, but when you take tanha in its whole entirety, then everything comes. You take tanha from Mahasati Pathan Sutta, 60 types of tanha, then nothing is left. Everything is gone. But canon में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह से describe किया है। अच्छा, so there is a technical difference, but in a conversational sense, जैसे इसमें भी मैं देख रहा हूँ, अब वो अगर हम उपादान कह के किसी चीज को डिस्क्राइब कर दें, या इवन फॉर आवर सेल्स हम उसको इस्तेमाल करें, तो उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं। इन एन अप्लाइड सेंस हम उनको इंटरचेंजेबली यूज कर लें, एज लॉन्ग एज वी आर क्लियर कि किसी भी प्रकार की ग्रास्पिंग जो है उसका रेफरेंस है। जैसे शील व्रत है ना, it cannot be called tanha. It is more of a clinging. That is this kind of subtle difference here. I see. So you can't refer to it as a thirst.
It's, I mean, you can obviously extend the definition and try to include it, but in the simple terms, Shilabharta and Ditthi, they're not in that category. Because Tanha is Vedana Pachya Tanha. So in that limited sense में देखें तो थोड़ा difference है. I see. So it is just that immediate next moment, so to say. Yeah. और उसके बाद जो होता है उसको ये लोग उपादान बताते हैं. फिर उसके बाद और कहानी ऐड हो जाती है कहानी. Yeah, so it is the Sankhar stage 2, stage 3, stage 4 and so forth. It is a proliferation of that. Yeah, right. So it may actually be helpful then in that sense to fully understand कि canonically तन्हा के अलग अलग क्या बताए हैं. जैसे आप बता रहे हैं, जैसे हमें याद है, I think 21 में हमने देखा था ना वो 60 types महासती पठान में, जैसे अभी आपने बताया. And similarly I'm assuming कि उपादान के भी फिर काफी varied narratives होंगे फिर इन चार के अलावा. बेसिकली यही चाह रही है मोस्टली. कोई और हो सकता है ज्यादा हो, जनरली चाह रही है. And similarly Tanha, apart from those main 3 and then the 60 variants, does he use it also in multiple senses? To my knowledge. So वो जो 60 वाला है, that is in that sense a little bit of an aberration then, because that is the universe of that is a complete. वहाँ पे पूरा तन्हा लोक किस लोक में किस एरिया में तन्हा जाग सकती है. So it gives a comprehensive kind of a universe. कहाँ पे अटैचमेंट हो सकती है आँख के प्रति, साइट के प्रति, चक्षु विज्ञान के प्रति, हस्त के प्रति. So you have a very, very comprehensive enunciation for a serious meditator where he can look कहाँ अटक रहा है. और अगर हम उसको रफली ट्रांसलेट करते हैं इनटू grasping or clinging, then but उस लिस्ट में भी शीलवत नहीं आता, दिट्ठी नहीं आती. So drishti is not a reaction to a feeling, huh? That's more a perceptual issue. The way you look at the situation, it is partly sanya, partly memory. So drishti upadan is basically an outcome of distorted view. Ichha ditti. In that sense, it's not tanha, or I mean, strictly in that strict sense of it. Of course, you can in one sense always relate it back that that must have been so many tanhas to so many छोटा events कि घूम फिर के फिर वो एक दृष्टि बन गया. ग्रास्प करने लगे. ऑब्जर्वेंस है कोई, उस ऑब्जर्वेंस के प्रति तन्हा नहीं जाती. किसी ने सिखा दिया ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, वो अटक गए बात. So the next paragraph में where he discusses the Ditthi upadana and others are described there. पर वो उन्होंने views के context में बोला है, whereas normally we use bhav and vibhav tanha के context में. No, Ditthi is used in terms of view only. Ditthi upadan की बात तो views के बारे में attachment है. हाँ, पर views के साथ उन्होंने becoming और non becoming रख दिया. Yeah, that is one of the views. Yeah. Okay. That is one of the उस समय के prominent views यही थे ना, शाश्वत स्वराज्य उच्छेद. So he is focused on. तो जब हम ऐसे कोई बात हम करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अच्छा कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ सफरिंग हो रही है, तो लेट्स लुक फॉर द तन्हा इन इट, है ना.
Usually this is the route we use now in the Noble Truths, Four Noble Truths paradigm. So ab, for instance, if the suffering is on account of my view of how the country should be, for example, है ना, let's take that, क्योंकि ये उसकी चर्चा कई बार हुई है, तो हमें फिर वहां तन्हा, वहां देखिए वहां भी तुम तन्हा ढूंढ ही सकते हैं ना भाई. It is तन्हा to that perception of whatever. Means tanha attachment to the country. Yeah, precisely. Yeah. So you can always go look for it. So even drishti upadan can be further broken and segregated. Kamma विचय किया जा सकता है. So they're all. That's why I prefer the way of Abhidhamma. Get it in. What is the root? And be happy with it. Is the root lova, dosha, or moha? And then you can see, हाँ ये सब उसी category में आ रहे हैं. उसके different forms हैं. लोभ के different forms हैं, या दोष के different forms हैं, या delusion के different forms. Then you know how to handle them, no, from practical point of view. Otherwise, because terms are so many. Yeah, exactly. You have asava, you have tanaha, you have sankhar, anushaya, you have sankhara, so many different terms. And all of them have special nuances, but eventually they are of those three categories. Similarly, wholesome are of other three categories. Wholesome में तो लिस्ट ही लगी हुई है. You have Vindipada, you have Bhojanga, you have faculties, you have parmis. So, and they're all overlapping. So when I prepared the table and all that, I could see that it's the value of Abhidhamma becomes clear. So this category में आ गया. So how do we relate the three roots to the aspect of tanha in the Four Noble Truths? Tanha in the way Four Noble Truths में define किया गया है, that is actually the craving, lobha. And then okay, right. अच्छा अच्छा. Yeah. Other extreme, जब उसको तीन हिस्सों में बांटा गया, तो दोष आ गया. Dosh also is available. When he defines I am Tanha Panu Bhavika Nandi Rag Sayagatha, then that definition is clear craving. I see. Then he further subdivides it into that. Because of the craving, there is also the not fulfillment of the craving leads to Vibhavtana, Jane Do, Jane Do. Correct. आपने पहले भी कहा हुआ है कि principally the Buddha's paradigm is in relation to craving. That is the principal thing. That is most of the people are bound to that. Vibhavtana is comparatively less intense in most people. And how do you subsume moh within that now? Yeah, within this, the moh is not there, but moh will come, for example, in ditthi. All ditthis will fall in the category of moh. Every kind of ditthi. So craving को फिर हम एक umbrella की तरह use नहीं कर सकते because it leaves out. Better to use it in terms of lobha and dosh. Right. Craving के लिए वो define subsets कर दिए. So I think you can allow people to meditate for some time. Let's meditate up to 8:25.